Hello students, welcome to the Shri Kshet Vidyapeeth School Sagartal Gwalior. Let's start our SST class. Chapter 4, Class 4, The Northern Plains. Today we are discussing about river basins of India, life in the Northern Plains. Let's start a class. River basins of India. The northern plains are formed by the soil and tiny pieces of rocks carried by the rivers flowing from the northern mountains. This rich, fertile soil is called silt, and it gets deposited in the plains by the rivers that flow in the northern plains. This fine silt, also known as alluvium, is good for growing crops. The northern plains have many cities and towns in which a large number of people live. The basin of Indus, Ganga, Brahmaputra from the northern plains. A basin is an area that is watered by a river and its tributaries. A tributary is a smaller river that flows and merges into a bigger river. उत्तरी मैदानों की मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा चट्टानों का निर्माण किया जाता है जो उत्तरी पहाड़ों से बहती नदियों द्वारा होती है। इस समृद्ध उपजाऊ को गाद कहा जाता है और यह उत्तरी मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों द्वारा मैदानों में जमा हो जाती है। यह रिच फर्टाइल, जिसे जलोढ़ के रूप में भी जाना जाता है, बढ़ती फसलों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। उत्तरी मैदान में कई शहर और कस्बे हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। उत्तरी मैदानों के बेसिन जैसे गंगा और इंदुस हैं। उत्तरी मैदानों के बेसिन गंगा और इंदुस हैं। बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे एक नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा पानी पिलाया जाता है। एक सहायक नदी एक छोटी नदी से है जो बहती है और एक बड़ी नदी में विलीन हो जाती है। Life in the northern plains. The northern plains are the most fertile region of India. Different part of crops are known in the northern plains. This region is also called the food bowl of India. Many factories are set up along the bank of the major rivers of the northern plains. This has led to cutting of forest, overuse of land, and releasing of harmful wastage from factories into the river. Due to the high level of soil and water pollution in the northern plains, the river water is unfit for drinking and irrigation. The Ganga Action Plan is a project which has been started to clean the Ganga. The National Capital Territory of Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and part of Assam and Tripura lie in the northern plains. उत्तरी मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी मैदानों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस क्षेत्र को भारत का भोजन कटोरा भी कहा जाता है। कई कारखाने उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियों के किनारे स्थापित किए जाते हैं। इसी कारण जंगलों की कटाई, भूमि का अत्यधिक प्रयोग और फैक्ट्रियों से नदियों में जाने वाले हानिकारक अपशिष्टों को छोड़ना पड़ता है। उत्तरी मैदानों में मिट्टी और जल प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण नदी का पानी पीने और सिंचाई के लिए अयोग्य है। गंगा एक्शन प्लान एक ऐसी परियोजना है जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय मैदानी भागों असम और त्रिपुरा के उत्तरी इलाकों में गंगा को साफ करने के लिए शुरू की गई है। This is the tick the correct options. This is in your book also. True, false and matching. And questions answer. Questions. Which are the three important river basin of the northern plains? Name the important crops grow in Uttar Pradesh and West Bengal. Which state of India lie in the Ganga basin? Which river dam this basin? What make the northern plains rich and fertile for growing crops? This is the answer of tick the correct options and true false matchings and answers. The Indus basin, the Ganga basin and the Brahmaputra basin are the three important basins of northern plains. The major crops grown in Uttar Pradesh are wheat, rice, sugarcane, oilseed and pulses rice, sugar cane, jute and the variety of food and vegetables are the major crops grown in the West Bengal. Third number is Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal are the states that lie in the Ganga basin. This basin is drained by the rivers Ganga, Yamuna, Gandak, Gomti, Gogra, Kosi, Chambal, Sindh, Betwa and Son. Fourth, the northern plains are formed by the soil and tiny pieces of rocks carried by the rivers flowing from the northern mountains. This rich soil is called silt alluvium and it is the fertile for growing crops. And your homework is write and learn questions and answers in your notebook. If you have any queries, so you can ask me. Thank you for watching.